Hello students, good morning everyone. Students, today in this video, I am going to summarize chapter 12, Culture and Science. So students, in India, Indian culture began to shape during the ancient period. Then the changes in the art, architecture, social customs, they were changed and many religious beliefs were evolved after the new religions which has been evolved like Buddhism and Jainism. So the Hinduism, Buddhism, Jainism and the other political development was seen, and many secular subjects like science, grammar and politics, they were neglected at the time, and many changes were seen. So in this chapter we shall learn about the scientific developments, cultural developments that took place in India during the ancient period. Okay, so let us see the development in the literature. First of all, the Sanskrit literature. So during the ancient time, many greatest work of the Sanskrit literature was seen, both religious and the secular also. So they were composed during the ancient period. First of all, during the Vedic period, many Vedic literature were composed like Vedas. Vedas were four: Rig Veda, Samveda, Yajurveda and Atharveda. So they were composed during the Vedic period. And first of all, the oldest Veda was the Rig Veda and last one was the Atharveda. After that, many supplementaries were composed like Brahmans, Aranyaks, Upanishad, then Puranas, epics like Ramayana and Mahabharata. They were composed during the ancient time under the Vedic literature, and most of these were passed orally. Means जो वेद थे उनको ओरली पास किया जाता था, दे वर नॉट इन द रिटन फॉर्म. उसके बाद कुछ चेंजेस हुए, देन उनको कुछ डायनेस्टीज ने राइट कराया, बट एक्चुअल में वेदास वर ओरली पास डाउन फ्रॉम द गुरुस टू दियर डिसिपल्स. Puranas, they contain the idea of the Vedic people about the origins of the universe and the god, sages and the ruling families. The epics, they carry the message of victory of good over the evil. This is important that you must know. जो epics हैं like Mahabharata and Ramayana, they gives the message that the evil can't win over the good things. जो बुराई होती है वो कभी भी अच्छाई पर नहीं जीतती है. सो एपिक्स कैरी द मैसेज ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर द इविल. दे फॉर्म द बैकबोन ऑफ द हिंदू रिलीजियस एंड सोशल लाइफ. रामायण, इट वॉज रिटन बाय महर्षि वाल्मीकि. इट वॉज अ स्टोरी ऑफ प्रिंस रामा ऑफ अयोध्या हु वॉज बिलीव द इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु. ठीक है, जो राम थे कहाँ के राजा थे? ही वॉज द प्रिंस ऑफ अयोध्या एंड आफ्टर ही बिकेम द किंग ऑफ अयोध्या. सो लॉर्ड रामा को इनकारनेशन माना जाता है लॉर्ड विष्णु का. व्हेन ही वेंट टू एग्जाइल, हिज वाइफ सीता हु वाज द प्रिंसेस ऑफ विदेया, हिज ब्रदर लक्ष्मण एंड दे वेंट अलॉन्ग विद राम टू jungle, and Sita captured by Ravan, the king of Lanka. Rama, he helped with the help of Hanuman, he attacked Lanka and killed the Ravan. He rescued Sita and returned to the Ayodhya as a ruler. So finally, Ram became the king of the Ayodhya and he ruled, and he gave the message that the good wins over the evil. Okay, next is Mahabharata. It was written by Maharishi Vyas. It described the struggle between two royal families. Mahabharata शायद आपने देखा हो, but you must know about it. So it was written by Maharishi Vyas. It is a story of two royal families, Kauravas and Pandavas. Pandavas were the 5 brothers and Kauravas, they were 100 brothers. Krishna, who was an ally of the Pandavas, who believed to be the incarnation of Vishnu also. He is the central character in this epic. In the war fought of Kurukshetra, Pandavas defeated the Kauravas. ठीक है, पांडवों ने कौरवों को हराया था with the help of Lord Krishna. ठीक है, the Bhagavad Gita, it contains the essence of the Hindu religious philosophy. It is a part of the Mahabharata. You must know, Bhagavad Gita is a part of which epic? It is a part of the epic Mahabharata. It stresses on the performance of duty without caring the fruits of the action. As like
जो हमारे एपिक्स हैं वो हमें क्या मैसेज देते हैं? दे कैरी द मैसेज दैट गुड विंस ओवर द एवल्स, बट द रामायण गिव्स द मैसेज दैट वी मस्ट डू आवर ड्यूटी विदाउट केयरिंग फॉर द फ्रूट्स ऑफ एक्शन। मतलब बिना रिजल्ट के बारे में सोचे हुए, व्हाट आर योर ड्यूटीज, व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू मस्ट हैव टू फॉलो एंड डू योर ड्यूटी। ओके, सो दीज आर द सेक्युलर, these are the religious things were done during the ancient time. Now let us learn about the secular literature. Secular literature which means which are apart from the any religion, किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं होता है, that is the secular literature. So Panini, who probably lived around the 4th century BC, he composed Ashtadhyayi. Ashtadhyayi means the meaning of 8 chapters, a composition of 8 chapters, a great work on Sanskrit grammar. A great scholar Kalidas of Chandragupta Vikramaditya's court. He was in the 9 jewels of Chandragupta Vikramaditya. He produced some famous works like Meghdut, Kumar Sambhavam and Abhigyan Sakuntalam. These were some writings of the Kalidas, who was a court poet of Chandragupta Vikramaditya. मेघदूत में उन्होंने क्या स्पेशल किया? सो मेघदूत इज़ अ वर्क ऑफ पोइट्री noted for its beautiful descriptions. It tells the story of a person who was banished for a year. जो मेघदूत है इसमें एक स्टोरी है एक पर्सन की जो काफ़ी सालों के लिए गायब हो जाता है, जो अपनी वाइफ को मैसेज पास करता है थ्रू द क्लाउड्स। अब आपको ये लग रहा होगा डिफरेंट टाइप हाइपोथेटिकल, क्या कभी ऐसा होता है कि क्लाउड से कोई मैसेज पास करता है? नहीं होता, बट इट्स एन हाइपोथेटिकल, जो एक्चुअल में इमेजिनेशंस होते हैं वो है। तो मेघ क्लाउड्स के थ्रू वो मैसेज सेंड करता है अपनी वाइफ के लिए। नेक्स्ट इज द पंचतंत्र। इट्स एन डिलाइटफुल वर्क, इट्स अ कलेक्शन ऑफ फेबल्स ऑन एनिमल्स ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। ठीक है, जब गुप्तास का रूल था तो उस समय पंचतंत्र की कहानियाँ काफ़ी फेमस थी, जिन स्टोरीज के थ्रू किंग्स को एडवाइस प्रोवाइड की जाती थी। ओके, so these were some secular works done during the ancient time. Next is Buddhist and the Jain literature. Buddhist and the Jain literature, these texts were originally composed in the Prakrit script, and after that they were translated into Sanskrit. ठीक है, उनकी स्क्रिप्ट जो थी प्राकृत थी, ओरिजिनली जो कॉमन पीपल्स बोलते थे उस स्क्रिप्ट में था, बाद में इनको संस्कृत में ट्रांसलेट किया गया। जैन लिटरेचर, दीज आर इनिशियली कंसिस्टेड ऑफ 14 ओरली टॉट टेक्स्ट, जिनको पूर्वास कहा जाता है। उनको बाद में रिप्लेस किया गया बाय 12 अंगास में सेक्शंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज बुद्धिस्ट लिटरेचर, they have a significant contribution to the Sanskrit scholars who made a rich contribution in that. Ashwaghosh, who wrote the Buddha Charit. Buddha Charit is a story based on the life of बुद्धा की लाइफ पर बेस एक स्टोरी है जिसको बुद्ध चरित कहा गया। इट वॉज रिटन बाय अश्वघोष। वासुमित्र, it's a collection of Buddhist scriptures, compiled the 3 books called Pitakas. पिटाका विच मीन्स द बास्केट, एंशियंट टाइम में बास्केट को पिटाका कहा जाता था। ठीक है, वन ऑफ द पिटाकास दे कंटेन द जटाका टेल्स विच आर कंपोजिशन इन द बुद्धिस्ट लिटरेचर, जिसमें बोधिसत्व के बारे में बताया गया। बोधिसत्व क्या है? सो बोधिसत्व, दीज आर द बर्थ ऑफ बुद्धा। माना जाता है दैट बुद्धा हैज़ टेकन द बर्थ ऑफ एनिमल, ह्यूमन बीइंग, बर्ड एंड वेरियस बर्थ ही टुक। तो बुद्धा के बर्थ के बारे में बताया गया बोधिसत्व के बारे में। मैंने आपको एक स्टोरी भी सुनाई थी, जटाका स्टोरी, जो डिपिक्ट करती है बुद्धिस्ट मोनूमेंट को, स्कल्पचर्स को। ओके, सो देयर आर सम स्टोरीज which are depicted in that Buddhist literature. So students, I think this is enough for today. So in our next video, there I will summarize the complete chapter. So till you should have to do the work and ask if there is any doubt what you have learned today. Okay.